नमस्कार रफी तो लास्ट क्लास रे हमें कंप्लीट करसिलु काइंड्स ऑफ एविडेंस टाइप्स ऑफ एविडेंस है कहते तो हमें अराउंड 10टा खंडे डिफरेंट को टाइप रो एविडेंस हे परिबो वेरियस बेसिस रे हमें सेटा देखि आज हमें जा देखियो हमें जा पढिचु केते बुझिचु हमें से कांसेप्ट ठीक है दैट वी विल सी सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन दा देखंतु in a complex financial fraud trial ठीक अछि ओटा complex financial fraud है जेमति आपनकर हमर इकोनॉमिक क्राइम्स होची तो फाइनेंशियल फ्रॉड गोटे है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स माने कोन ना एते ताको सॉल्व करिबा इजी नो मल्टीपल ट्रेल्स अछि मे बी बाहर देशरु रहिची ए टाइप रो थि द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट्स a series of algorithmically generated reports that analyze vast data sets of financial transactions. Which type of evidence is the most accurately classified as, and what are the primary admissibility challenges? ठीक अछि ता माने कोन ना प्रोसिक्यूशन आपनकर एविडेंस केते गुडा देछि जोड़ा की एनालिसिस ह्यूमन बीइंग्स करनंती एल्गोरिथमिकली माने कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से माने करछन ठीक अछि ता भीतर तनु एटा को टाइप रो एविडेंस अंडर रे जीवो फर्स्ट आसिला रियल एविडेंस challenges relate to chain of custody documentary evidence challenges related to authentication and best evidence rule demonstrative evidence challenges related to relevance and undue prejudice और last है digital evidence challenges related to reliability and algorithmic bias okay तो से जो एल्गोरिथम एमाने यूज करचंदी से एल्गोरिथम केमती चलिबो कोन सेटा तो कोड जान नांती ना if there is bias in the algorithm bias माने जति सेटा न्यूट्रल नुहो हैला अनबायस्ड नुहो गोटे पार्टी की फेवर करिवो यू डोंट नो तो ए जो चार्टटा देछि आ भितर आपनकर हबो कोन that it is digital evidence हैला ऑप्शन डी that will be correct it will be digital evidence आमे खाली ए देखु कि आमे गोटे क्वेश्चन देले आमे जानि पारचु कि नहीं कि से एविडेंस टा को टाइप बुझि परले तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को आसंतु during a murder trial the prosecutor introduces a 2D reconstruction of the crime scene created under laser scanning technology एला अपन जानचंदी क्रिमिनल केस रे सबले क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन हुए आपनकर अक्यूज जे ताको सेठी कि निया हुए तू कोन करथु केमती करथु द पचरा हुए आ बहुत गुले फेमस केसेस रे अपन जानचंदी एई टाइम रे ही एनकाउंटर सुरा हुए सन सकाळ सकाळ नेबे देखु 3:30 4टा सकाळे आ हठात कि सकाळे खबर आसियो कि से रिकंस्ट्रक्शन रे छड़े की बंदूक पळुथला आ ताको एनकाउंटर रे ओके ताको एलिमिनेट कराला कुछ गलत ताको क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन कोंत तो ए जो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन रे प्रोसिक्यूशन 3D रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक से माने यूज करछन ओके केमिति ना गोटे मेथड लेजर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी यूज करी this reconstruction aims to illustrate the spatial relationship between various pieces of evidence what type of evidence is this spatial relationship कोन तुरंतो केते ओके स्पेस इन स्पेस माने डिस्टेंस केते कोन से टाइप स्पेटियल रिलेशन ओके ताकू स्पेटियल रिलेशनशिप को जाय माने धरंतु से कोठी एंट्री कला रूम को तो रूम रो डोर रो एंट्रेंस ता कोठी आउ तापर से अटैक कोठी कला विक्टिम की केते बाट सेटा डोर रु से जो छुरी धरथिला ओके कोठू पाइला कि से नहीं के आस्तिला कोन करथिला राइट तो ए सब जिनसोडा माने डिफरेंट सबु आपनकर एविडेंस जा अछि आपनकर सेठी ओके मर्डर वेपन हला
victim ହେଇଗଲା accused ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ distance ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ କେମିତି ଥିଲା ସେଇଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଟା 3D construction କରାଯାଇଛି ଓକେ so ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାରର evidence ହବ first option ହେଲା it is real evidence second option ହେଲା it is documentary evidence third option ହେଲା demonstrative evidence ଆଉ fourth option ହେଲା circumstantial evidence ତ ଏଠି କଣ କରାହଉଛି ବେସିକାଲି ସେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରୁଛି prosecution ସେ 3D ମଡେଲ ରେ କି actually ସେଠି ସେଦିନ କଣଟା ହେଇଥିବ so it is a demonstrative evidence ସେ demonstrate କରୁଛି କୋର୍ଟ କୁ କି କଣ କେମିତି ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ so second question ର answer C ରହିବ okay demonstrative evidence that will be the Listen to me. answer hello forensic linguist testifies analyzing the language used in a series of anonymous threatening emails to identify the likely author. Which type of evidence is the linguistic analysis? Okay, linguistic analysis किए, forensic linguist किए, linguist किए कि language रो analysis करे, ठीक है? तो forensic linguist माने से किसी evidence दोची और किसी criminal case की कौन which is related to language ओके कि गोटे जणको गुड़ी बाजी होला सीए तार डाइंग डिक्लेरेशन गोटे एमिति भाषा रे देला जोटा कि से पाखापाखि जो लोक अछंदी केही जानि पारलेन किंतु ता भितर गोटे लोक रेकॉर्ड कर देछि सेटा ता मोबाइल रे ठीक अछि तो एटा लिंग्विस्ट के देखा है लिंग्विस्ट तार कहला एटा ई लैंग्वेज है से कहूछ एनालाइजिंग द लैंग्वेज used in a series of anonymous threatening emails to identify the likely author এই কেসে কোন ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଇମେଲ ପଠଉଛି threaten କରୁଛି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଇ ମାରିଦେବି କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେଇ ଜାଗାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହଁ ସେମାନେ ଅଲଗା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ବୋଧେ ପଠଉଛି ଓକେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ଟା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ ଦେଲା ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପ ର ଏଭିଡେନ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟେଷ୍ଟିମନି circumstantial evidence direct evidence ନା hearsay evidence ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ये जो लोक जी ओके ये लिंग्विस्ट जी फोरेंसिक लिंग्विस्ट ये कौन ये गोटे एक्सपर्ट ये ता डोमेन रे तार एक्सपर्टीज अछि तेणु सी आसी कोर्ट को कहूची कि ए जो ईमेल उडा आछि एई भाषा रो जा भी से कहूची ओके सो सोडे एक्सपर्ट हिसाब रे कहूची तेणु दैट इज एक्सपर्ट टेस्टिमनी ऑप्शन ए पहला करेक्ट आंसर एक्सपर्ट टेस्टिमनी ठीक है तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को आसंदु in a civil trial concerning a defective product the plaintiff represents a series of customer complaints posted on online forum how should these complaints be categorized and what is the primary admissibility issue okay तो जने गोटे किसी जिंस गोटे दे गोटे गीजर जने किनथिले से गीजर ता तांकर डिफेक्टिव बाहरला से एबीसीडी कंपनी रु सेटा किनथिले से बे कोर्ट रे कहउचंदी कि देखंतु ऑनलाइन रे ओके ए एबीसीडी कंपनी ऊपर एते लोक माने जो माने ए गीजर किनचंदी माने नेगेटिव रिव्यूज दैछन कार खराब हे जेजी कार हो नहीं कार कोन सब प्रॉब्लम चलछ ओके the plaintiff presents a series of customer complaints posted on an online forum. How should these complaints be categorized and what is the primary admissibility issue? ए जो complaints गुड़ा हैला online पे ठीक अछि कोर्ट को तो जणिए कस्टमर जाइछ किंतु सी कोर्ट रे देखौची बहुत गुडे एमती कस्टमर्स अछंती जो माने ऑनलाइन से माने तांकर प्रॉब्लम्स ता फोकस करछन तो ए माने जो ऑनलाइन सब करछंती तांकर ताकू को टाइप रो एविडेंस हमें कहि परिबा ओके आउ कोर्ट को प्राइमरी एडमिसिबिलिटी इश्यू कोन रहबो माने कोर्ट काई कि एटा एक्सेप्ट करिवे ओके तो देखंतु फर्स्ट हला रियल एविडेंस ओके डॉक्यूमेंटरी एविडेंस डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस आउ डिजिटल एविडेंस तो ऑनलाइन रे
जो जिनसटा अच्छी गोटे रिव्यू अच्छी जहाँ भी अच्छी ताको हमें कौन कहबा सेटा जेहेतु ऑनलाइन रे अच्छी सेटा डिजिटल एविडेंस ऑप्शन डी कोर्ट कहीं ताको एडमिसिबल न नहीं पारंती इश्यू ऑफ रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ये ठीक लोक एक्चुअल कस्टमर जे किनिची सेटा सीए सेटा लिखिची बोली किछि माने नहीं ताकू जी भी लिखि दे पारे ताकू तार कंपिटिटर्स पैसा देकी लिखि दे पारंती ठीक अछि तापर गोटे लोक तार अलग किछि प्रॉब्लम अछि कंपनी से किंतु से मिचुअली भी लिखि दे पारे सपोज से किनिया पे जाइतिला सेठिकार जे लोक अछि से ताक से भलरे बिहेव कला तो एक्चुअली से किनिनी जिंसडा किंतु तार आगोटा अछि कंपनी ऊपर तेणु से कोन कला से कंपनी अगेंस्ट गोटे रिव्यू लिखितला ठीक अछि तो कोर्ट एई सब जिंस भी भाबे तेणु इश्यू ऑफ रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ओके जो ऑनलाइन रिव्यू जोड़ा अच्छी ऑनलाइन कंप्लेंट्स जोड़ा अच्छी से गुड़ा जेन्युइन एक्चुअल कस्टमर्स करो कि किए ताको पैसा नहीं कि लिखि देछि सेटा कोर्ट जानि नांती तेणु रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी रो इश्यू अछि हैला तो 4 हैला आंसर और डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है जी नाउ कम टू क्वेश्चन 5 एटा हमें लास्ट क्लास रे जो देखिथिलु डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओके आपनकर एविडेंस तो सेटा हमें भलरे बुझिजु कि नहीं सेत पे हमें किछटा सिचुएशनल क्वेश्चन नउचु कि एई सिचुएशन हेची तो एटा को टाइप रो एविडेंस से जीव ठीक है तो 20 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस 5 नंबर क्वेश्चन देखंतु ए सर्वेलेंस वीडियो edited to highlight specific movements of a robbery is presented in court. What is the nature of this evidence and what are its main concerns? Dita part se coach. को प्रकार एविडेंस आउ एई टाइप रो एविडेंस यदि कोर्ट ताको एक्सेप्ट करूचंती तादरे कोन कोर्ट को देखि जाई कि भाबिबार अछि हैला तो एटी कोन कहूची गोटे सर्वेलेंस वीडियो सीसीटीवी हमर फुटेज जोटा रहउछ सेथरे चोरी हबार स्पेसिफिक टाइम टा से देखौची एई समय चोर पसला डेगी गला जा गला से चोरी टाइप रो ओके तो एटा कोर्ट को दिया होची तो कोर्ट ओके व्हाट फर्स्ट ला व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस इट इज तापरे कोर्ट को कोन जिंसटा माइंड रखिया पड़िबो सो रियल एविडेंस डॉक्यूमेंटरी एविडेंस डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस की डिजिटल एविडेंस ओके so you know that CCTV footage सेटा भी digital evidence हैला तो D will be the answer again it will be digital evidence आउ कोर्ट को कौन देखिया पड़िबो concerns about editing and manipulation ता माने कोन मिचरे भूलभाल करी आउटसाइड करी कि ओके सन किछरे कर दैछंदी ओके भूल रे कि फॉर्जरी करी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जा भी मैनिपुलेट करी कि से माने वीडियोटा बनाइछंदी वीडियोटा जेन्युइन नुह रियल नुह ओके इट हैज बीन टैम्पर्ड विथ एडिटिंग कराई सेडा तेणु कोर्ट को सेटा देखिया भी पड़िबो कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के डिजिटल एविडेंस दउचंदी एटा ठीक अछि ना एथरा असुविधा अछि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड सो आंसर इज डी क्वेश्चन 5 रो आंसर हो डी ओके तापरे एटा से कोच सीसीटीवी फुटेज रो जेतळे हमें सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट रे नउचू कोर्ट केतेटा जिंस देखंती कि सीसीटीवी फुटेज टा रियल अछि कि एटा एडिटिंग हेची एटा जो जिंस एक्चुअली देखेबा कथा सेगुला न देखे कि भूलभाल जिंस एतरे पसे दैचंदी कि ओके तो ताको टैम्परिंग कोंती ओके से टैम्परिंग कि हेची कि एटा तो कोर्ट सेटा देखिबे जदि टैम्परिंग हेइनी ओके आउ सीसीटीवी फुटेज टा ठीक अछि ताले कोर्ट ताको एक्सेप्ट करिकि ताको आगु को यूज करिवे इन द ट्रायल ठीक अछि किंतु जदि कोर्ट को लागिला कि एडिटिंग हेची मैनिपुलेशन हेची ताले से ताको एडमिट न करि पारन किबा जदि भी एडमिट करचंदी ताको एते फोकस न दे पारंती फाइनल वर्डिक्ट रे द वेट ऑफ दैट एविडेंस विल बिकम वेरी लेस वेरी लो ओके कहना ता क्रेडिबिलिटी नहीं कोर्ट को एमिति लागु कि एटा बोधे कि जणे ताको यू नो एडिटिंग करिकी कि किछि सॉफ्टवेयर यूज करिकी वीडियोटा बने दी एटा एक्चुअल वीडियो नु रियल वीडियो नु
ओके तेणु से लास्ट पार्ट टा कहला कंसर्न्स अबाउट एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन ओके तेणु एटा जेहेतु ए चारिटा ऑप्शन रे डिजिटल एविडेंस केवल गोटे अछि तेणु सेटा ही आंसर हम ओके बट तार पूरा जहाँ से देइछि सेटा देखिया दरकार कहीं ना आमे शिखिबा कोन पई से तार कंसर्न्स कोन ओके तार इश्यूज कोन जोटा सेकंड पार्ट रे देइछि कहछि ना व्हाट इज द नेचर ऑफ एविडेंस द नेचर ऑफ एविडेंस जानलो हमें डिजिटल एविडेंस एंड व्हाट आर इट्स मेन कंसर्न्स सो कंसर्न्स अबाउट एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन बुझ पछन तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु क्वेश्चन नंबर 6 एटा भी हमें लास्ट जोटा देखथिलु से फोरेंसिक लिंग्विस्ट एग्जैक्टली सेम टाइप रो क्वेश्चन माने एक्सपर्ट एविडेंस क्वेश्चन ओके क्वेश्चन 6 the first 10 question I will tell you the answer then after that you should tell me the answer question 6 ta dekhantu an expert witness provides testimony based on statistical analysis of DNA profile ता अर्थ कोन कि accused जे तार रक्त किबा तार बॉडी फ्लूइड क्राइम सीन रे मिलछि ओके जे भी मारिछि मर्डर करछि तार डीएनए सैंपल मिलछि क्राइम सीन आउ accused रो डीएनए सैंपल निया कि तार रक्त रु मैच कराउछि ओके तो जे एक्सपर्ट विटनेस अछंती से एनालिसिस टा करछन कि accused रो डीएनए सैंपल है जोटा क्राइम सीन रे मिलथिला जो लोकर डीएनए सैंपल सेटा है डीएनए प्रोफाइल है ताको मैच करिकि से ता एविडेंस टा देले व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस इज दिस एंड व्हाट आर द की चैलेंजेस तो हमें जानि परलो एटा ओके सीधा एटा आ गोटे क्वेश्चन भी पड़थिला गुरु कोन एटा हैला एक्सपर्ट विटनेस काहे ना ए जो लोक आसी कि कोर्ट रे ओके ये तांकर टेस्टिमोनी दउचंती दैट इज योर डीएनए एक्सपर्ट जे ओके so that is expert testimony okay based on scientific evidence challenges kon challenges related to reliability and validity ता अर्थ कोन कोर्ट को देखिया पे हबो कि ये जो टेक्नोलॉजी टा कहउचंती ओके ताकू हमें रिलाय करि परिबा कि केबे एमती हेछि कि ये टेक्नोलॉजी टा भूल रिजल्ट देछि केबे एमती हेछि कि जेमती संभावना अछि कि ये एक्सपर्ट किबा आउ कि किसी से जो सैंपल रे हेर फेर कर देथिले ठीक अछि तेनु कोर्ट को सेगुडा देखिया पे पड़िबो नले टाइप ऑफ एविडेंस एटा हला आपनकर एक्सपर्ट एविडेंस ओके बुझि परले एटा हला क्वेश्चन 6 नाउ कम टू क्वेश्चन 7 देखो तो एटा in a contract dispute email exchanges between the parties are introduced as evidence हला गोटे कॉन्ट्रैक्ट ऊपर डिस्प्यूट अछि धरंतु ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हला कि जा भी दी जन निज निज भीतर कॉन्ट्रैक्ट करथिले कि मु तुमे मते एतिकिरा कोल्ड ड्रिंक दबो मु तुमको एते पेमेंट करिवि से लोक कोल्ड ड्रिंक देलान ओके तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हे गला ठीक अछि सो एई टाइप रो आंसर तो सेमान जो निज भीतर कम्युनिकेशन करथिले सब ईमेल रे करथिले से ईमेल एक्सचेंज उडा कोर्ट सामने रे प्रोड्यूस कराई ओके हाउ शुड दिस ईमेल्स बी कैटेगराइज्ड एंड व्हाट आर द प्राइमरी एडमिसिबिलिटी कंसीडरेशंस ओके एन ईमेल माने कोन सेटा ओके व्हाट विल बी ईमेल देखंतु जो ऑप्शंस दिया हिची ता भीतर कोटा आपन को सबटु ठीक लागुची ईमेल ऑब्वियसली इज डिजिटल एविडेंस तो फिजिकल नो ना कि मु चिट्ठी लेखि कि पठैथिली पेपर रे ऑनलाइन पठाई छी सो डिजिटल एविडेंस सब ओके आउ तार इश्यू कोन रहइबो जा डिजिटल एविडेंस रहउची इंटीग्रिटी ऑथेंटिसिटी से जो ईमेल आपण पठैले से ईमेल टाको टेम्पर कराइनी तो ता कंटेंट्स उडा चेंज कराई जायनी तो ई गुडा सब रहि जो से right so question number 7 answer will be D okay that is digital evidence how digital evidence सब बेले कोर्ट को टिके व्यस्त रहया पड़े कोन ना एविडेंस टा टेम्पर हेची कि नहीं ओके एनी डिजिटल एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट करिया गुरु ए जिंसरा से भलरे चेक करन कि
से डिजिटल एविडेंस टैंपर हेनी ओके मैनिपुलेट हेनी सेटा से देखो सो डी विल बी द आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन 8 ड्यूरिंग ए ट्रायल a witness testifies about a statement they overheard okay but they cannot identify the speaker what type of evidence is this and what are the main concern कौन ना गोटे विटनेस आछि गोटे केस रे टेस्टिफाई करिया पे ता साक्षी देबा पे ठीक अछि कौन से साक्षी देउती कि मु सुनिथिली आर रूम रे जने कहला कि मु मर्डर कर दै छी जनकर जस्ट मर्डर करके आसिल ओके किंतु किए कहिछि सेटा से देखि नांती किंबा ताको वॉइस रो से चिन्हि परना ताले ये जो आसी कोर्ट रे कहले मु सुनिथिले आर रूम रे जने आसी कहला कि मु एबे मर्डर करके आछि एटा को टाइप रो एविडेंस हबो काहे कि ना से सेटा जानि नांती निजे ओके कि किए से कहउतला से जिंसटा ठीक अछि सो ऑल्दो से सुनिचंती निज कान रे ओवरहर्ड करिचंती ओके किंतु से आइडेंटिफाई करना करि परिबेनी किए से लोकटा किए कहतला सो आंसर इज सी आपको कोनती हियर से एविडेंस से निजे देखि नांती निजे जान नांती कहा द्वारा से सुनिचंती ठीक अछि तो एठी कोन एठी से निज कान रे सुनचंती किंतु ही डजंट नो हु सेड इट ये जने गोटे कहला ओके सेमिति तो साक्षीटा आपण दे परिबेन ना जेतोला आपण एविडेंस देबे you have to be particular you have to be pinpointed एई लोकटा करची एई लोक को मु देखथिली एई लोकटा कहितला आपण सेई टाइप रो कहि पाय दरकार हम जनरली कहिबे मु सुनिथिली जणे एमती कहि गला जणे हजार जण भी हे परंती जो मन से जागो आस्थिल कुछ करते सो इट विल बी हियर से एविडेंस सी होबा ऑप्शन हियर से एविडेंस असुविधा कोन सेटा रिलायबल कि नाही हमें जान ये सत्तरे सुनचंदी कि नाही हमें जान ठीक है सो there is always a concern about reliability of hearsay evidence हैला so question 8 C हैला आपनकर करेक्ट आंसर hearsay evidence तापरे question 9 को आसंतु जेतला आपण क्राइम हुए ओके कि ओले छुरी का बुझ देला किए कागु गुड़ी मार देला तेणु जेतले से छुरीटा जनक देहरे पसुची कि गुड़ीटा एंटर करूची रक्त बाहरिबो डिपेंडिंग ऑन को जिंस रे आपण मारले केते स्पीड रे केते वेलोसिटी रे से लोकर देहरे पसिला रक्तटा सेही हिसाब रे बाहर ओके तेणु पाखरु गुड़ी मारले जो रक्तटा बाहरिबो सेटा अलगा टाइप रो बाहरिबो दूररु गुड़ी मारले अलगा टाइप रो बाहरिबो पाखरु गोटे ब्लंट ऑब्जेक्ट माने जंती गोटे बड़ बेसबॉल बैट से जन को मारले तार ब्लड स्प्लैटर अलग आसो तेणु गोटे क्राइम सीन रे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बेले ब्लड स्प्लैटर एक्सपर्ट था माने रक्तटा को डायरेक्शन रे पड़ी केमिति पड़ी को शेप रे पड़ी सेटा देखिले से माने कहि परिबे एई पर्टिकुलर मर्डर वेपन रे जिंसडा मर्डरटा कराइछ ओके तो तारी ऊपर गोटे से सिचुएशन देखि A blood splatter analysis performed by forensic scientists is introduced to reconstruct the events of a violent crime. What type of evidence is this and what are the main admissibility challenges? Okay, blood splatter analysis. Okay, go to forensic scientist. You are expert witness. Okay, तो सी कौन कर क्राइम सीन रिकनस्ट्रक्ट कर ओके तो को टाइप रो एविडेंस आर प्रॉब्लम कोन एविडेंस है सो यू नो दैट से जो फोरेंसिक साइंटिस्ट जे से गोटे एक्सपर्ट टेस्टिमनी ही इज एन एक्सपर्ट से जहां कोर्ट को कहउछन सेटा एक्सपर्ट टेस्टिमनी अंडर रे आसीबो सो एक्सपर्ट टेस्टिमनी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस challenges कोन challenges relate to reliability and validity okay the reliability of validity means से टाइप रो साइंटिफिक एनालिसिस भूल हे पारे की so that is called reliability जंते डीएनए टेस्ट हमें जानछु केबे भूल होबन ओके कि बहुत कम चांस कि सेटा भूल होबो 1 in a million में भी तेणु सेटा हाईली रिलायबल एंड वैलिड आल्सो ओके कोर्ट रे वैलिड होबो कि नहीं फॉर एग्जांपल लेट्स से ये आपनकर यदि कोर्ट को परमिशन न नै कि आपण
lie detector test कर देइचंदी मैक्रो एनालिसिस टेस्ट कर देइचंदी कोर्ट को परमिशन नहीं ना किंतु सेटा पुणी आनी कि कोर्ट रे देखौछन ओके से प्रूफ टा ताल सेटा अपन कानाडा वैलिड नुह ठीक अछि रिलायबल मे भी हेई पारे गोटे पॉइंट रे बट वैलिड तो मोटर नुह ठीक अछि तो क्वेश्चन 9 रो आंसर of C that is it is expert testimony based on scientific evidence. It challenge the challenges relate to reliability and validity. Now coming to question 10. In a patent infringement case, a computer simulation demonstrates the functionality of a disputed technology is present. What kind of evidence is this? What are the primary concerns? Patent infringement ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ବନେଇଛି तार मु पैटेंट बनैछि बट आउ गोटे लोक मोर इनोवेशन को नेकी से निजे किछि कर देछि किबा से सेटा ही ओके निज नारे से ताको बिकिबा स्टार्ट करछि तो मो पैटेंट ऊपर से इन्फ्रिंज कला ठीक अछि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपन पढुचंती तारि ऊपर ए कंप्यूटर सिमुलेशन डेमोन्स्ट्रेटिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ए डिस्प्यूटेड टेक्नोलॉजी ताको भीतर जो प्रॉब्लम चली छी से जो केस रे जो टेक्नोलॉजी टा यूज होउची ताकू डेमोन्स्ट्रेट करा होउची ओके यूजिंग कंप्यूटर सिमुलेशन कोन जानछथि माने एक्चुअल जिंसटा केमती होतिबो ओके गोटे वीडियो गेम टाइप रो गोटे सिमुलेशन सबटु बेस्ट एग्जांपल आपनकर बहुत गुडे देश रे इवन एबे आपन जे देखिबे ड्राइविंग स्कूल जो अछि बहुत जगह रे से माने सिमुलेशन ट्रेनिंग कराउछन सिमुलेशन ट्रेनिंग माने एक्चुअल गाड़ी रे आपन को बसेबेनी सेठी गोटे सिमुलेटर टे थिबो आपन सेठी बसिए बस गाड़ी बढ़िया फीलिंग आउथिबो आपन चलेबे कोन सेठी एक्सीडेंट जा भी गले आपन को एते प्रॉब्लम नै केनटा सिमुलेशन ता केमती पायलट्स माने केमती उड़ा जहाज उड़ेबो सेटा से माने सिखंदी ताको डायरेक्टली तो के प्लेन दे दियंती ना कि नियो ताको चलो ताको बहुत ट्रेनिंग हुए ओके आ इतरे सिमुलेशन ट्रेनिंग बहुत है तो सेमती सिमुलेशन ट्रेनिंग कराउते ठीक अछि तो को टाइप रो एटा एविडेंस हबो ओके एंड असुविधा कोन व्हाट वुड बी द प्राइमरी इश्यूज फॉर द कोर्ट इन एडमिसिंग दिस टाइप ऑफ एविडेंस तो एटी कोन होची एटी कोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट कराउची ओके कि ए जो विषय रे केस ता अछि डिस्प्यूट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऊपर सेटा एमिति काम करे सेमिति काम ओके तो एटा डेमोन्स्ट्रेट करा होची कोर्ट राइट so this is demonstrative evidence okay this is demonstrative evidence it is being demonstrated to the court आम एमती भी कहि परिबा कि जेतु गोटे कंप्यूटर सिमुलेशन ताले डिजिटल एविडेंस कहीं हबन सेटा भी हे पारे डिजिटल एविडेंस ओके बट कथाटा हला ए सिमुलेशन इज नॉट एविडेंस बुझि परछन तो सिमुलेशन रे माने एग्जैक्टली कोन सेटा हेतिला कि सेतबेले आपण सीसीटीवी देखौचंती आपण ईमेल देखौचंती जोटा एक्चुअली हेछि सिमुलेशन ता एया देखिया पे कि हां एमती हेई पारि थिबो ओके दीज आर द पॉसिबिलिटीज राइट तेडो डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस हबो आ प्रॉब्लम कोन तार ना एक्यूरेसी और रेलेवेंस जो देखौचंती जा भी आपणकर डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस सेटा केस को रेलेवेंट हेतिबा दरकार ओके सो 10 नंबर रा C would be the answer, demonstrative evidence. Okay. The first 10 questions, I told you the answer. Now I will give you 10 seconds for each question. Chade padibe. Kotera question tige lamba achi, but you read the question. I'll give you 1 minute dandu, and you tell me what is the answer. Okay. So come to question 11. During a trial concerning workplace safety, ता अर्थ कोन आमे ऑफिस रे काम करते से एनवायरनमेंट तो वर्कर्स मानक पे सेफ होबा कथा ना दैट इज कॉल्ड वर्कप्लेस सेफ्टी ए कंपनीज इंटरनल सेफ्टी मैनुअल is presented. What kind of evidence is this and what are the main admissibility considerations?
गोटे केस किसी गोटे हिची आउ ता रिलेटेड आपनकर ओके गोटे इंटरनल कमिटी डॉक्यूमेंट गोटे सेटा कोर्ट सामने प्रेजेंट हो ओके तेणु एटा को टाइप रो एविडेंस हबो देखो see all the options निजे पढ़ंतु options को and tell me what you feel is the correct answer से कहूची सेफ्टी मैनुअल इज प्रेजेंटेड सेफ्टी मैनुअल कौन तो बहीटा थी लिखाई थी से ए स्टेप्स आम नौ तो आ भितर कोटा हम बुझिपारे क्वेश्चन को तो बेसिकली what you have to remember is बहीटे प्रेजेंट होची माने कौन सेटा डॉक्यूमेंट so obviously it will be documentary evidence okay how considerations about authentication and relevance okay considerations about authentication and relevance कि से जो ऑथेंटिकेशन कौन से जो डॉक्यूमेंट दिया है सेटा ऑथेंटिकेटेड तो ओके एक्चुअली ताकर जो ऑफिस रे जोटा फॉलो होची सेटा तो एंड रेलेवेंस ठीक है तो जो एबे केसटा चली ता रिलेटेड सेटा अछि तो इज इट रेलेवेंट सो एनीवे सेगुडा जेतो हमें फंडामेंटल एग्जांपल्स देखु फंडामेंटल क्लास रो आपण बुझी पारछन कि नहीं सेति पई ए देखंतु जो ऑप्शंस रो दिया हिची एमसीक्यू रे एगुडा सब अलग अलग अछि तेणु मु जानछि बहीटा दउचंदी माने डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ठीक अछि सो बी एल हमर आंसर किंतु एक्चुअली जेतरे जुडिशियल सर्विस कि कोनोसी गोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो आपनकर हबो सेतबेले एमती लागिबो कि चारटा जक ऑप्शन ठीक अछि सेही सब केसेस रे जोटी मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट आपण कोन करियार अछि यू हैव टू चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन ठीक अछि जोटा सबुठो आपण को ठीक लागुची सेटा को चूज करिवे ओके दैट यू हैव टू कीप इन माइंड सो 11 रो आंसर होबा आपनकर बी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस okay now come to question 12 question 12 नीचे पढ़ंतु टेक 30 seconds ओके नीचे पढ़ंतु नीचे तार कौन आंसर हबो सेटा देखो पढ़ले सो कौन सिचुएशन अछि गोटे विटनेस टेस्टिफाई करिछि ओके से ताको इमोशनली से स्टेबल नांती इमोशनल डिस्ट्रेस ताको अछि किछि ओके आउ से जते बडे इमोशनल डिस्ट्रेस से रहउचंती कौन कौन ताको संगे घटुची ता फिजिकल इंपैक्ट ता ऊपर कौन पड़ के निज हाथ को बाडे दउची के नो से टाइप ओके व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस इज दिस जने कोर्ट सामने रे निजर इमोशनल डिस्ट्रेस बेले हाउ इट इज फिजिकली मैनिफेस्टिंग ठीक है सो कौन हम एटा व्हाट विल बी द आंसर देन सो एटी से कौन कहउची बेसिकली ये जो जे विटनेस जे तांकर कथा कहउचंदी से एक्सपर्ट नो
First है रियल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ले विटनेस एविडेंस की एक्सपर्ट टेस्टिमनी. सो ये है ले विटनेस. ओके, तम ले विटनेस माने कोन हम ले मैन कहूँ कि तांकर कोनोसी से पर्टिकुलर एक्सपर्ट नुह से गोटे जिनस रे से जा देखुचंती से नॉर्मली सेटा कहउछन. इट्स ले विटनेस. सी वुड बी द आंसर. ले विटनेस टेस्टिमनी. असुविधा कोन है? चैलेंजेस रिलेटेड टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. ओके, से जा कहउचंती सेटा कोर्ट ताकू डिफरेंट कोर्ट डिफरेंट बाटर नहीं पारंती. सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. ओके, कहीं ना सीए निज एक्सपीरियंस विषय में कहउचंती मते एमती खराब लागला, मते या लागला से लागला. एबे आउ गोटे जो दीज आर ऑल कोन इमोशंस आर सब्जेक्टिव. सेही सिचुएशन रे आउ गोटे लोक डिफरेंट टाइप रे रिएक्ट करथांदा. ओके, सो सी हबो आपन आंसर क्वेश्चन 12. तापरे क्वेश्चन 13 को आसन. टेक 2 मिनट्स. देखंतु एटा. ओके, व्हाट विल बी द आंसर? निजे क्वेश्चन रीड करंतु. मु एका संगे 30 एबे दीदीटा क्वेश्चन दोची. 13 टा आउ 14 टा. आई विल गिव यू 2 मिनट्स. देखंतु निजे पढंतु. ओके, आस्ते आस्ते आपन को से स्किल्स उडा भी एक्वायर करिया पे पड़िबो. ओके, कि बेसिक क्वेश्चंस रु आस्ते आस्ते एग्जाम लेवल रो क्वेश्चंस आपण केमती करि पारे. ओके, दीटा क्वेश्चन दियाला. क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14. टेक 2 मिनट्स. चेष्टा करंतु ठीक आंसर टा बाहर करिया पे. इजी क्वेश्चंस अछि. बेसी एटा जेतु फर्स्ट टेस्ट टा बेसी एक्सप्लेनेशन रे पसंद नहीं. ऑल फोर ऑप्शंस आर डिफरेंट. तेणु आपण टाइप ऑफ एविडेंस सेति की जानि देले आपण आंसर टा पाई जिवे. ओके, सो प्लीज सी, टेक सम टाइम. ओके, एंड आई विल डिस्कस आफ्टर 2 मिनट्स.
Got it? File answer कौन होगा? Now come to question 13. In a case involving environmental pollution, sediment samples are analyzed to determine the presence of toxic chemicals. ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟେ ଅଛି ସିଏ ପଲ୍ୟୁସନ ବହୁତ କରୁଛି ସେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସବୁ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉଠି ସେ ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛି ସେ ଏରିଆର ସଏଲ କୁ ନେଇକି ଏଭିଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ଦିଆହେଇଛି ଓକେ ସୋ କି ଏଇ ସଏଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟକ୍ସିକ କେମିକାଲ୍ସ ଅଛି କେମିକାଲ୍ସ ଗୁଡା ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାରୁଛି ଓକେ ସୋ what type of evidence is this and what are the key considerations ଆପଣ ପୁରା ସଏଲ ଟାକୁ ନେଇକି ସେଡିମେଣ୍ଟ ସାମ୍ପଲ୍ସ କୁ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଗୋଟେ କଣ ନା ଫିଜିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ରିଅଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଓକେ ଏଇଟା ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ କି ରିଅଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ କହୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସଏଲ ଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା so that will be the answer real evidence ତାପରେ ତାର କହୁଛି କଣ ଅସୁବିଧା ଏଥିରେ ହେଇପାରେ consideration about chain of custody and testing methodology chain of custody ମାନେ ସେ soil ସେ sediment ଗୁଡା କାହା under ରେ ଥିଲା ସେମାନେ କିଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି ତ ଟ୍ୟାମ୍ପର କରିନାହାନ୍ତି ତ କି ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି ହେଇନି ତ ଓକେ so A is the answer real evidence ହେଲା ତାପରେ next question question 14 during a trial a witness prior inconsistent statement recorded in police interview is introduced to impeach their credibility what type of evidence it is and what is its purpose okay so এটা କଣ ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୋଟେ ୱିଟନେସ ଆସିଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି କଣ କରୁଛି ନା ସିଏ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି କି ଇଏ ଲୋକ ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଭୁଲଭାଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଏବେ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ ଆମେ କେମିତି ମାନିବା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଅଛି ଗୋଟେ ୱିଟନେସ ର ଓକେ ତାକୁ ଡିସକ୍ରେଡିଟ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ଆଉ ତା କହିବା ପାଇଁ କି ଆର ଯାହା ବି ଏଇ ୱିଟନେସ ଟା ଏଭିଡେନ୍ସ ଦବ ଏଇଟା ଏତେ କୋର୍ଟ ସିରିୟସଲି ନ ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଏମିତି ମିଛ କହିଛି କି ଭୁଲ ଜିନିଷ କହିଛି ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ କହିଛି ଥରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା ସେମ ସିଚୁଏସନ ର ଓକେ ସୋ ସି would be the answer impeachment evidence to discredit a witness ଓକେ ତାପରେ 15 କୁ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ again ମୁଁ question 15 16 ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇ ଦଉଛି so you can just try yourself ଆପଣ ଯଦି previous class ଟା କରିଛନ୍ତି types of evidence ତାହେଲେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା କଥା ଯଦି ଆସୁନି ତାମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ପାର୍ଟଟା ପୁଣି ଯାଇକି ସେ କ୍ଲାସ ଟା ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ପୁଣି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଗୁଡା ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଗୁଡା ପଡିବନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବ୍ୟାଚ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି କଥା ଠିକ ଅଛି ସୋ 15 and 16 again 2 minutes try to get the correct answer ନିଜେ ପଢନ୍ତୁ ନିଜେ options ଦେଖନ୍ତୁ okay then you choose the correct answer
Done. এই দুইটা questions. तो 15 को आसंदु. तो situation टा बुझंदु. In a case involving a defective airbag, crash test data from government agency is presented. What type of evidence is this and what are the admissibility concerns? अर्थ कौन? Airbag, defective airbag माने गोटे कार की को vehicle रे airbag थिबो. Airbag रो काम कौन? जेतेबेले गोटे accident हबो सेटा open हे जिवो आउ लोको ताको बेसी injury हबनी जे. Defective airbag माने जे accident बेले तो खोलिलानी कि जा भी हैला. तो ताकू देखिया पे कि से एयरबैग रे डिफेक्टिव गोटे गवर्नमेंट एजेंसी रे गोटे क्रैश टेस्ट हला से जो एक्सीडेंट रो सिमुलेशन से माने आउथरे करेल. ओके तो एटा को टाइप रो एविडेंस हबो. ओके तो कोन से ठीक कराउची एडी प्रॉपर्ली आपण को बुझियार अछि. क्रैश टेस्ट डेटा फ्रॉम ए गवर्नमेंट एजेंसी इज प्रेजेंटेड हला. कोर्ट सामने क्रैश डेटा खाली दिया हो. डेटा केमती दिया हो? इधर आपनकर रिपोर्ट रे दिया हो नले गोटे सीडी रे दिया हो हैला. से जहां भी हो इट विल बी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस. ओके आउ व्हाट आर द एडमिसिबिलिटी कंसर्न सेडा जेतु गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स अछि. ओके तो कथाटा हला हमरो इट इज बेसिकली डॉक्यूमेंटरी एविडेंस हैला. तो एटा मोस्ट पिलांगर भूल हुए. ठीक अछि. कहीं डॉक्यूमेंटरी एविडेंस बुझी पारे तो क्वेश्चन टा ठीक रे पढ़िबे. से गवर्नमेंट एजेंसी रु कोन टा दिया हला? डेटा टा दिया हला. क्रैश डेटा टा दिया हला. ठीक अछि. जदि सेटा एमती कुआई तांता कि कोर्ट सामने रे क्रैश टा को सिमुलेट करा हला. ओके रिकंस्ट्रक्शन आपण करचंदी क्राइम सीन रो ताले कोन हेतांता डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस हेतांता. ओके किंतु एठी कोन कोर्ट को डेटा टा केवल दिया हला. 16 number question, forensic anthropologist testifies about estimated age and sex of skeletal remains found crime scene. What type of evidence is this? What are the main challenges? ये forensic anthropologist माने हला ये जो हाड़ फाड़ ओके सेउडा देखी गोटे हाड़ मिलला गोटे जगार ये केते दिन पुराना लोकटार डेथ केबे हेतिबो कोन व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डेथ एते दिन परे तो ये गोटे सब से माने forensic anthropologist काम से. Okay so he is an expert so C hoba answer expert testimony. Okay now come to next set of questions 17 and 18. Okay 17 18 take 2 minutes complete the questions.
Okay. तो 17 18 ର आंसर्स देखिले 17 का सुनदोगे in a copyright infringement case a computer program source code is presented code टा present कराया okay how should be this classified and what are the primary admissibility consideration सोर्स कोड टा प्रेजेंट कराला जेंति आपण ଗୋଟେ प्रोग्राम लिखुचंती कोन अछि से प्रोग्राम रे ओके सो दैट इज बेसिकली डिजिटल एविडेंस कैन हेडा इलेक्ट्रॉनिक डेटा कोड टा तो आपण खातार लिखे ना कोड रा लक्ष लक्ष लाइंस रो हितु ओके सो इट इज डिजिटल एविडेंस 18 को आसंतु a witness testifies about general reputation of a person within a community what type of evidence is this ame character evidence पढ़िथिलु किंबा एठी जो दिछि रेपुटेशन एविडेंस ये लोक रेपुटेशन टा है कैरेक्टर टा है ओके सो दैट विल बी द आंसर रेपुटेशन एविडेंस और which establishes your character last data question 19 and 20 19 and 20 तो एटा देखंतु what will be the answers last two questions तापरे केते आपण कोन ठीक हैला that we will discuss so take just go through these questions ए क्वेश्चन रा देखंतु कोन आर आंसर हबो देखंतु
Okay, so tell me the answers. Question 19 को आसंतु एटा को टाइप रो एविडेंस इन ए प्रोडक्ट लायबिलिटी केस. प्रोडक्ट लायबिलिटी कोन कोन ना गोटे प्रोडक्ट आपण किनचंदी खराब पड़ला कि तार किछ नेगेटिव इफेक्ट आपण ऊपर हे होला लायबिलिटी एबे मैन्युफैक्चरर जो बनेबो. सो इट्स अ प्रोडक्ट लायबिलिटी केस. आपण जे कंज्यूमर कोर्ट रे केस करछथि कि मु प्रोडक्ट आनी की यूज करली और तार ए मो ऊपर इफेक्ट होला. A consumer social media post detailing their injury is introduced. कि गोटे क्रीम लेखा हिला कहला कि भाई लगे दियो तो मोर कम्प्लेक्शन चेंज हो कि जहाँ भी हम लगेला पर मत एलर्जीज गला जहाँ भी रिएक्ट करगला मो स्किन ऊपर. व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस इज दिस एंड व्हाट आर द प्राइमरी कंसर्न्स. तेणु सोशल मीडिया जहाँ लिखाई अगेन सेम जिनस हम जोटा फर्स्ट 4-5टा क्वेश्चन से देखथिलु. सो इटा डिजिटल एविडेंस हैला. ओके, रिलायबिलिटी ऑथेंटिकेशन तार प्रॉब्लम रहइबो. ओके, तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को आसंतु. An economist provides testimony based on complex financial models predicting future market trends. But economist से testimony देने कोर्ट पचार तो कौन होबो आगु मार्केट रो इकोनॉमी रो कंडीशन से ताकर किछि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी कोर्ट को से यूज ना क्वेश्चन. ओके, सो इकोनॉमिस्ट जे से ओडा एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स. सो एटा एक्सपर्ट टेस्टिमनी होबो सी. ओके, expert testimony based on economic models challenges related to reliability and validity. Okay, fine. So 20टा क्वेश्चन हला. आ भितर जदी 10टा रु कम आपनकर ठीक अछि ता माने आपण आउ थरे से क्लास टा देखंतु काइंड्स ऑफ ओके एविडेंस. काहे कि ना जदी बेसिक एटा जेतु फाउंडेशनल क्लासेस एटा जेतु बेसिक्स उडा आपण जदी न क्लियर करि परिबे ताले आगु को जाय कि एतरा एप्लीकेटिव क्लासेस रहइबो कि जुडिशियल सर्विसेज रिलेटेड क्लासेस रहइबो सेठी आपण को असुविधा होबो. एनीवन हु इज गेटिंग मोर देन 10 ठीक अछि आपण मोर और लेस कांसेप्ट बुझी चंती. एप्लीकेशन रे टिके टिके केतडे भूल हे जाय सेटा जेते प्रैक्टिस करिवे सेते आस्ते आस्ते एटा परफेक्ट हो. ओके, सो लास्ट थ्योरी क्लास रो एटा तारो टेस्ट थेला. तो नेक्स्ट हमें कंटिन्यू करिवे. हमें टाइप्स ऑफ एविडेंस देखिथिलु. So in the next class, we will continue the theory aspects. Okay. Thank you all. Namaskar.